damn history optional. We have two questions today on decolonization. क्या करें? So both of them I have purposefully picked up from PYQs. I wanted to see how do you respond to these questions, because there is a topic called decolonization which is not yet fully explored by UPSC. अभी तक उसको एक्सप्लोर अच्छे से नहीं किया है. देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स. ये अपने आप में पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. एंड इन इंडिया रिसेंटली दिस थिंग्स आर गेटिंग हिटेड अप. एवरीबडी वांट्स टू गेट डीकोलोनाइज्ड. तो ये टॉपिक धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो सकता है. इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे वुड आस्क. तो हमने दो क्वेश्चन वही उठाए हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं. वी शुड बी रेडी विद देम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डीकोलोनाइजेशन हैज फिनिश्ड. It definitely belongs to the past, yet somehow it has refused to become history. Critically examine. On this question, most of you, I have seen at least half of the answers before I came here, not all of them. The answers are relatively well written. They have covered most of the points. फिर भी ना उसमें कुछ points है. जैसे कि take ईशान for example. ईशान has used a very beautiful line. उसने एक लाइन ऐसी लिखी थी, ओनली द टर्म कॉलोनाइजेशन हैज सीज टू एग्जिस्ट, but the practice in reality has continued. A good line. But then his answer thereafter focused primarily on international relationship issue, IR. And the same happened with, I guess, you also. Many of the points are about international relationship. जैसे आपने लिखा है, मैंने पॉइंट्स नोट भी किए, बायस इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि हाउ यूएन है या बाकी WTO है, IMF है, दे सर्व द कॉज ऑफ द बिगर पावर्स. देन यू टॉक ऑफ मिलिट्री बेसिस बीइंग कंटिन्यूड in weaker countries by the bigger countries, checkbook diplomacy, interference in domestic affairs especially during Cold War, and then the political elite का emergence. इतने ही पॉइंट लिखे थे ना. आई थिंक political elite आपने नहीं लिखा है, बट political elite आपने नहीं लिखा है, वो आई थिंक किसी और ने लिखा है. But my point is that points are not wrong, they are correct, but they are more about how the main or major powers in the era of Cold War interfered with smaller countries. Why there are problems in international relationship, why it is not completely moral and based on just global order. उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा चले गए. कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन डिबेट इज यस, वो पार्टली सही है, बट उसका दूसरा जो हिस्सा है, वो जो डीकॉलोनाइज सोसाइटी है उसमें क्या डिस्टॉर्शन आया, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड 50% आंसर शुड गो टू द डोमेस्टिक इश्यूज. वो पार्ट मिसिंग है. इन केस ऑफ पायल, पायल हैज डन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इट इज अ गुड थिंग. शी हैज गिवन सजेशन, लिस्ट ऑफ सजेशन फॉर वन कंप्लीट पेज कि व्हाट टू डू टू अचीव रियल डीकॉलोनाइजेशन, जो मैंने भी नहीं किया है. शी हैज गिवन एटलीस्ट आई थिंक 8 या 10 पॉइंटर्स. तो वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि आइडिया इज गुड, दैट यू कैन सजेस्ट इन वन पैराग्राफ what all should be done to ensure actual real decolonization, but एक पूरा पेज उसको देने की जरूरत नहीं है. इट्स अ 10 मार्कर. 10 मार्कर gives you only 2 pages, front and back. उसमें at max you will have a space to write one paragraph, 2-3 lines where you can mention what should be further done to ensure the actual decolonization. उसके लिए पूरा पेज आप pointers नहीं दे सकते, but she suggested some good points. For example, you should change the Eurocentric syllabus in education, or reparations for slavery and massacres, restitution of cultural artifacts and objects like Benin statues जो आजकल वापस दिए जा रहे हैं. Then she goes again to the global relationship, CBDR, de-dollarization and multipolar world, UNSC का permanent seat India को दे दो, and reversing brain drain. So these are actually good points, but Payal understand that we cannot give one complete page, more than a page rather. आपको उसमें से 2-3 पॉइंट लेके जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन यू टू शो द पाथ कि ये सब करना बाकी है. बट मेजर आंसर इज अबाउट व्हाई इट इज स्टिल नॉट द पास्ट. उसको बाईपास नहीं कर सकते. देन वी हैव मयांक. आई थिंक मयांक वाज ऑनलाइन बट नाउ आई कांट सी. मयांक राठौड़, ही इज, आई थिंक ऑफ द कॉपीज आई हैव सीन सो फार, ही इज द ओनली वन हु हैज मेंशन्ड व्हाट आई वांटेड टू मेंशन, सम थिंकर्स which brought the post-colonial thought. And the most important in this context is Frantz Fanon. उसके बिना ये आंसर कंप्लीट हो ही नहीं सकता.
Well, let me tell you, ये statement है किसका? Although I am not completely sure, but I did quite a bit of search of different types of terms in Google in different ways to identify एक statement किसका है, and I came across one book in which this statement is given, and the author of the book is H.L. Wesseling. H.L. is a historian of decolonization. उसका statement है. Maybe it doesn't matter because we need not know. The meaning is amply clear. What is the meaning of the statement? So, while many nations achieved political independence after World War II, they continue to face problems due to the legacy of colonization in the following manner. 10 marker है, you can't have long introduction. मुद्दे पे आओ. In the following manner. The first point, the end of formal colonial rule did not eradicate the colonial ideologies and institutions. दोनों चीजें, ideas and institutions. Most post-colonial nations continue with colonial administration and legal system, including the borders. तो problems आते हैं because of India-Pakistan border. अभी हम बात कर रहे हैं आज के दिन में. You can give an example over here. In case of India, we are trying to replace Indian Penal Code. Why? It is the example of decolonization. The language, only language is not getting changed. Entire basis from penal code to justice code. क्यों हो रहा है? Because it is decolonization. Then political independence did not automatically ensure or end the colonial economic dependency, because colonization was basically an economic relationship where the economy of a colony was crafted carefully to subserve the need of mother country. तो डिपेंडेंसी बनकर, इन केस ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, बट हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर कंट्रीज वेयर सिंगल कमोडिटी कंट्री, जैसे आइवरी कोस्ट, घाना, या और कोई छोटी छोटी कंट्री है जहाँ पे एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या एक मिनरल प्रोडक्ट होता है जिसके आधार पर उनकी पूरी कंट्री की इकोनॉमी चलती है. एंड दैट डिपेंडेंसी इज एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, एंड दैट कंटिन्यूड इवन आफ्टरवर्ड्स, perpetuating unequal power relationship. Example, many African countries continued or continue to export raw materials to the global north while importing finished goods, resulting in a lopsided trade relationship. वो आज भी है. So it has refused to go away. Then this point almost everybody has written, neo-colonization, and that is a good thing, and that you have global institutes like multinational companies है and financial institutions है, they continue to exert pressure. They decide कि भाई आपके यहाँ austerity होगी क्या, आपके यहाँ structural adjustment program SAP होगा क्या. इंडिया ने भी सहन किया उसको आफ्टर 91. इट वॉज फोर्स्ड अपॉन अस, कोई चारा ही नहीं था, आपने मानना पड़ा. आज के दिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान बोले IMF लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. IMF सेइंग भाई यू हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स ऑफ ऑस्टेरिटी, इट इज नॉट एबल. तो ये क्यों? सो आउटसाइड पीपल आर डिक्टेटिंग द टर्म्स कि डोमेस्टिकली आपकी पॉलिसी. सो इट इज इन्वेजन, इट इज वायोलेशन ऑफ योर सॉवरेन राइट्स, बट करना पड़ता है. सो ट्रैम्पल अपॉन द सोवरेनिटी ऑफ द नेशंस. Then this point, very few people have written, it led to structural inequality in land distribution and resource access. Some specific communities, some specific minorities, some specific castes got lot of advantage because they became the adjunct of the colonial apparatus of extraction and exploitation. जैसे कि एक सीरिया में we have Alawites. Now Alawite, although they are Sunni, but that Alawite sect is a minority sect. Syria was under French after World War I. So Alawites became francophone, or francophile and francophone both. So they completely modernized, but अपने country में वो है 10% ही. But they became the ruling elite, power elite. Same thing you go to Iraq. Iraq में although वो शिया सुन्नी का कॉन्टेक्स्ट पूरा वहीं से आता है आज के दिन में. But anyway, by favoring certain castes and communities against another, the post-colonial nations continued to struggle with political and social unrest emerging out of such disruption and rather distortion. Then colonization has reshaped socio-cultural and psychological setup. You have to use the word psychology. It is not only cultural. Psychology is a very important term. It is here you have Frantz Fanon. It affects your psychological. He is a fantastic thinker of decolonization. आप पढ़ो मत, उसको समय नहीं है, बट एक स्मॉल नोट बना के रखना ऑन फ्रांस फैनन. मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ही विल बी वेरी यूजफुल फॉर एनी क्वेश्चन ऑन फ्रांस फैनन. देखो, समझो वो क्यों इंपॉर्टेंट है.
In the previous era, in 1970s, 1980s, etc., the academia used to focus more on the political and the economic consequences of colonization. कि इकोनॉमिकली कितना लूट के गरीब कर दिया, इमिजरेशन, पॉपराइजेशन, ऑल दोस थिंग्स, गरीबी आ गई, ट्राइबल का, लोअर कास्ट का, सबका कैसे किया, एंड दिस ऑल ड्रेन थियरी, दे आर इम्पोर्टेंट, नो डाउट. बट ओवर लास्ट 30 years, 40 years, द विंड्स हैव शिफ्टेड. वो रिसर्च हो गया, and that is okay, that is important, but there are certain other aspects also which cannot be forgotten, और वो है psychological and cultural distortions of colonization, and they have started to come out. उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है. तो आपका जो टॉपिक आज का है, अंडर डेवलपमेंट, दैट इज स्पेसिफिकली इकोनॉमिक, बट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, एंड उसके बाद हम इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रहे मेनी ऑफ द कंट्रीज, उसके पीछे यू हैव टू कम टू साइकोलॉजिकल मेकअप कैसे चेंज किया, और उसमें फ्रांस फैनन इज वेरी इंपॉर्टेंट. But anyway, so colonization had reshaped socio-cultural and psychological setup of people. For example, local languages, indigenous knowledge, cultural norms, art forms, and thus identity were objectified, inferiorized, and suffered the imposition of foreign culture. इसको हम बाद में बात थोड़ी करेंगे in the next question. I will explain it much more. But anyway, despite some amount of cultural revival during the freedom movements, for example, Swadeshi movement was not only economic and cultural. Swadeshi पूरी थी उसमें. We have painting, Indian painting बने Bengal school, Indian music. We have lots of all the classical dances in India came for classical painting, classical music, classical dance. क्यों बनता है? It is part of your cultural freedom movement. Freedom movement was never only political, although our textbook focus on political a lot. It was also cultural, historical भी थी, it was social भी थी, it was also spiritual. Such sense of deep inferiority complex has not been overcome, and true decolonization in my of mind still remains in future. Thus, despite formal independence, the legacy of colonization continues insidiously and shapes the contemporary realities of post-colonial nations. Recognizing and addressing these enduring effects is crucial for achieving true decolonization. उनको पहले जानो, समझो, मानो, and then address भी करना शुरू कर दो. Then I have added Frantz Fanon and his most celebrated book, The Wretched of the Earth. ये जो पोस्ट colonial thinkers है ना, इंडिया में बहुत कम है. इंडिया is still focusing more on economic causes, but in case of Latin America, in case of Caribbean, and in case of Africa, you will find many thinkers moving beyond this economic and political paradigm and bringing that cultural aspect and making it important. इंडिया में अभी भी अपना इंटेलेक्चुअल एलिट इज थोड़ा सा इन डिनायल. वो अब धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है. इसीलिए यूपीएससी के 2 सवाल है, दे हिंट कि ये बदलाव आना शुरू हो गया है अपने अंडरस्टैंडिंग में. इतना भी नहीं कि हम पूरा फोकस वहां पे करें, 1-2 थिंकर काफी है, अपना काम हो जाएगा. So Frantz Fanon argues in The Wretched of the Earth, decolonization is not merely a political process but also deeply psychological and cultural one. The struggle with the internalized oppression, the task of rebuilding their identities continues long after the formal decolonization. एक जनरल लिख लो उसको, ठीक है. बट द सेकेंड क्वेश्चन, नहीं, इस क्वेश्चन में मेरे को और 1-2 चीज़ें बोलनी है. मयंक हैड मेंशन अनदर थिंकर. आई थॉट कि इस क्वेश्चन में कितने लिखेंगे, बट यू शुड टेक अ नोट ऑफ इट. आप इसको नोट कर लो, इज इंपॉर्टेंट. एनिबल क्विहानो. Hannibal Quijano. He has talked about 2 things: coloniality of power and coloniality of knowledge. Coloniality of power and coloniality of knowledge. ये 2 चीजें उसने बताई है, and they are fantastically important. For example, I'll give an example. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आजकल एक मानते हैं कि कोई इंसान अगर फेयर स्किन है, वाइट है, गोरा है, तो सुंदर है. ये कहाँ से आता है? वाई? इंडिया में कभी हजारों साल कभी नहीं रही ये सोच. नेवर एवर. अपने भगवान भी हम काले दिखाते रहे. पेंटिंग में देखो आप, राजपूत एरा में जाओ, अजंता में जाओ, काले हैं, नीले हैं. ये व्हाइट को सुपीरियर मानना, फेयर स्किन मतलब बेटर, इट इज अ कंप्लीटली विक्टोरियन कॉलोनियल imposition in your mind. We are still yet to get decolonized.
तो व्हाट ही इज सेइंग क्यूहानो कि ये, और लुक एट आवर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑप्शनल की हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस इन हिस्ट्री ऑप्शनल, इट इज स्टिल वेरी मच यूरोसेंट्रिक. इट्स हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड एक्सपांशन ऑफ यूरोप. इट इज नॉट वर्ल्ड हिस्ट्री इन ट्रू सेंस. जहाँ जहाँ वी स्टार्ट विथ अवर एनलाइटनमेंट एंड हम वहाँ वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ वो आइडियाज पहुँचते हैं यूरोपियन. वाई? उसके पहले कुछ नहीं था, और जो कुछ था बेकार था, पढ़ने लायक नहीं है. तो इवन हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस ऑफ यूपीएससी नीड टू बी डीकोलोनाइज्ड. वो नहीं होगा आसानी से इतना. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूपीएससी इज नॉट क्रिएटिंग कंटेंट एंड नॉलेज. दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज. यूनिवर्सिटी में भी वो नहीं हुआ है अभी तक. तो यूपीएससी बेचारी क्या करेगी, है ना? तो एनीवे, we have coloniality of power and coloniality of knowledge. For that you can mention this person, and there are many people. M.A. Caesar है, you have the most famous Edward Said, he talks of Orientalism. You have Michel Foucault. There are many thinkers. उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है. Even होमी भाभा, कब आया था ये? मुझे एक बार क्लिक याद नहीं हो रहा मेरे को, लेकिन हो सके एक बार देख के बता देना, ठीक है? Anyway, so now with that context in mind, come to the next question. History of Africa appears to be simply an extension of or mere sub-theme under the broad headings of European and American history. According to this historiography, Africa seems to be without any history before the European scramble. Elucidate. Now think of how we study history of Africa in world history for UPSC and in universities. आपने नाम सुना है मूसा का? कौन सा मूसा? Not about the, yes, richest person. But how many civilizations in Africa you can count on your fingers right now? It is one of the biggest continents, one of the. इसमें हजारों साल में इतने बड़े बड़े साम्राज्य हो गए, इतने बड़े बड़े राजाएं हो गए. किसको नाम पता है? 5 नाम गिनाओ मुझे. मैं कहूँ आपको भाई, बस मुझे बस इटली के 4 नाम बताओ, राजा बता दोगे? इटली तो छोटा सा कंट्री है. सो अंडरस्टैंड दैट स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, इतना इसके हिस्ट्री ऑफ स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका इटसेल्फ शोज व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ द वे वर्ल्ड हिस्ट्री. इट इज कंप्लीटली यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री राइटिंग. लेट अस सी हाउ आई हैव इवॉल्व्ड द आंसर. द फिनोमेनॉन ऑफ द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री. क्यों? क्योंकि अफ्रीका को आपने कर दिया मार्जिनलाइज. इट हैज बिकम अपेंडेज टू यूरोपियन हिस्ट्री. Marginalization of history of colonized peoples. So I am in the introduction, I have not come to Africa per se. I am talking of a generic global phenomenon of any colonized nation. Colonized peoples by European scholars is a critical, it's critical to understand the operation of imperialism, how imperialism was operating. While the earlier historians focused on political and economic techniques of imperialism, recently the focus has shifted to the techniques of intellectual, cultural and psychological domination of the conquered people. वो जो typical question यूपीएससी पूछे जा रही थी पहले कि why there is underdevelopment, why there is no development even after decades of independence, what is the problem, उसमें हम लिखते थे कि भाई political boundaries ऐसे बना है कि ethnic tribes are not aligned with the political boundaries, they don't have education, they are looted and exploited and poverty है वहाँ पे, education, वो सब चीज़ें वो तो ठीक है, they are important. बट आपके आंसर में ये पॉइंट्स भी आने चाहिए, तो आपका आंसर बनेगा कंप्लीट इन द लेटेस्ट टाइम. वो आंसर आप लिखते हैं 1980 में, 1990 में. इफ यू राइट आंसर इन 2023, योर आंसर हैज टू इंक्लूड एटलीस्ट कपल ऑफ पॉइंट्स ऑन द पोस्ट कॉलोनियल थॉट. तो देयरफॉर older answers used to focus on political and economic aspect. The newer answers should also have to focus on intellectual, cultural and psychological colonization. And when in the previous question we say it is still not the past. Why? इसमें तो past हो गया, इसमें past नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है. Take for example, I have come to Africa now. For example, in the case of Africa, it was labeled as a dark continent by Europeans before the scramble began. This phrase suggests that only with the European colonization that the real history of Africa began. पहले सारा अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे. And only when Europeans brought the light of modernity, that is the enlightenment, rationalism and etc. and culture to Africa as part of civilizing mission, the real progress of Africans began. Whatever existed prior to that was relegated to the mass of uncivilized backwardness. Irrelevant चीजें.
क्यों इररिलेवेंट है? वो तो इररिलेवेंट यूरोपियंस के लिए, अफ्रीकन के लिए थोड़ी है. Then, however, the reality is that Africa did have a rich and diverse history independent of European colonial influences. Civilizations like in Egypt, Kush, Mali, Benin, Nubia, Axum flourished, which made significant contributions to science and literature. Africa was also a major center of trade and commerce for centuries, linked to Europe, Asia, and the Americas. तो उनका कल्चरल, उनका पॉलिटिकल, उनका सोशल, उनका इकोनॉमिक, उनका साइंटिफिक आपने सब भूल के, जो हमारे यहाँ कौन कहते हैं वो साहब, मैकॉले साहब, इन सब का ज्ञान जो है एक अलमारी के भी लायक नहीं है, सब बेकार. अरे पढ़ा तो आपने कभी जिंदगी में? Recently, the most famous author you should quote in case of Africa is Chinua Achebe. He is not historian per se, but he is a literary figure, but he is phenomenon, fantastic person. He has written many books, of which compelling narratives of how the vibrant pre-colonial society was devastated and not elevated due to European colonization. तो पहले कितनी vibrant and अच्छी थी. So you have not brought any positive influence. You have actually destroyed good thing that existed. समझो यूरोपियंस लोग. बट ये प्रूव करने में ही इतनी 70-80 साल की मशक्कत जा रही है. मतलब इमेजिन द अमाउंट ऑफ होल्ड ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन आवर माइंड इवन टुडे. वी हैव टू प्रूव कि उनसे पहले कुछ थे. देन Europeans colonized Africa, exploited its resources and introduced new diseases and technologies that profoundly impacted African societies. तो ये पैराग्राफ जो है वो उनकी बढ़ाई वाला है. ये कहते हैं पहले कुछ था और ये आज हम लिख रहे हैं. देखो ये ऑथर भी कह रहा है. ठीक है. दिस इज हाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कवर्ड. Then come to the second point. Secondly, giving precedence to the scramble of Africa, which supposedly brought light to the dark continent, puts European knowledge at the center of history. Europeans के लिए डार्क था ना वो, अफ्रीकन के लिए थोड़ी डार्क. इंडियंस के लिए भी डार्क नहीं था. Indians used to go to Africa all the time. It ignores the fact that for Africans, Africa was never a dark continent. Thus, decentering of Africans from the history of Africa. हिस्ट्री लिख कौन रहा है? गोरे लिख रहे हैं अपने लिए. उसमें से उन्होंने जिनकी हिस्ट्री उन्हीं को हटा दिया. हिस्ट्री अपनी खुद की लिख दी उनके नाम पे. सो डिसेंटरिंग अफ्रीकन्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका dehumanizes their own experiences and takes away agency from them. ये decentering, dehumanizing, marginalization, agency, these are the key words you are supposed to use in such answer. Thirdly, by focusing on European exploration and discovery, जैसे जो फेमस कहानी बचपन से हम सुनते आए हैं, वो कौन सी कहानी है? डॉक्टर लिविंगस्टन. Am I right? I suppose. हाँ. So we have that person going to find Dr. Livingstone and कहते डॉक्टर लिविंगस्टन I suppose. The Dr. Livingstone I suppose कहानी यूरोप का बच्चा आज भी पढ़ता है स्कूल में. तो by focusing on European exploration and discovery and downplaying the achievements of African cultures, this narrative makes Europe the center of the world while African cultures are seen as inferior. This sense of superiority has been used to justify colonization, enslavement and exploitation of Africans. और ये इतनी गजब बात है that Africans were considered animals. क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल कंट्री से आते हैं, ब्लैक स्किन के हैं, कल्चर नहीं है, तो दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल. तो उनको एनिमल्स के तरह ही यूज करो, स्लेव बना के, पिंजरे में रख के. यही तो किया था, सालों साल किया था. आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ बुक, सर्कल ऑफ मोरालिटी, ऐसे कुछ उसका नाम है. उसमें ये लिखा है कि ह्यूमैनिटी इज प्रोग्रेसिंग एंड विद दैट प्रोग्रेस ह्यूमंस सर्कल ऑफ मोरालिटी इज ऑल्सो एक्सपांडिंग. पहले के जमाने में हमें आज लगता है कि भाई ये क्या था, हमारे पुरखे लोग इतने कैसे बारबरस हो सकते हैं. तो इन प्रीवियस टाइम ओनली योर ओन पीपल ऑफ कम्युनिटी एंड कास्ट एंड विलेज वेर कंसिडर्ड ह्यूमन. बगल वाला विलेज मार दो, काट दो. फिर हमारी थोड़ी प्रोग्रेस हो गई, हम थोड़े और ग्लोबल हो गए. अब हमारे सारे देशवासी हमारे लोग हैं, दे आर ऑल ह्यूमन. उसके बाहर जो है उनको मार दो, काट दो. मतलब मारने काटने की जरूरत पड़े तो आई डोंट फील बैड, आई विल यूज देम बट आई विल नॉट ट्रीट देम इक्वली. Then you go to next level, you think of international thing. All the humans are equal. That happened in last 200-300 years gradually. तब आपका सर्कल ऑफ मोरालिटी और एक्सपांड हो गया, उसमें और लोग आ गए. There will come a time जब वो और एक्सपांड होगा, उसमें सारे जानवर भी आ जाएंगे. आज हम जानवर को खाते हैं. After 200 years it may happen the PETA people will win the entire narrative and then हमारे
मतलब वो जनरेशन कहे कि यार हमारे 300 साल पहले 200 साल पहले लोग इंसान खाते थे चिकन को मटन को, ये तो गलत बात है, कितने क्रूर कर्मा थे ये लोग। यही तो हुआ है। सेम थिंग इन इंडिया, अपने कास्ट, देन अनटचेबल्स, देन वुमेन, एंड नाउ यू गो टू, तो ये सर्कल ऑफ मोरलिटी इज एक्सपांडिंग। ये बहुत ही यूरोसेंट्रिक नैरेटिव है। इंडिया में ऐसे नहीं था। इंडिया स्टोरी इज डिफरेंट। वी डोंट हैव रिलीजन स्टोरी। हमारे यहाँ ऐसे भी रिलीजन रह चुके हैं जहां पे ह्यूमन स्पीशी इज नॉट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और स्पीशी ट्रीटेड इक्वली, लाइक जैनिज्म फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे कोई यूनिलिनियर नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो होता है ना, दैट इटसेल्फ इज एनलाइटनमेंट रैशनैलिटी, दैट आल्सो इज प्रॉब्लम। बट एनीवे, कम बैक टू आंसर. So fourthly, such Eurocentric history writing, by focusing on European victories and downplaying, ignoring victories of colonized people, erases the history of resistance to colonize. आपको पता ही नहीं कहाँ का रेजिस्टेंस हुआ था, बस पता है कि आप कहाँ कहाँ हार गए थे. History of Africa is history of defeat of Africans. So such narrative not only makes colonization look inevitable and unstoppable, but also discourages resistance today and makes it more difficult for colonized people to achieve their freedom. And fifthly, this Eurocentric narrative is internalized by many Africans today who continue to consider indigenous culture as inferior while that of colonizers as modern and superior. This perception permanently creates fissures in indigenous society and strikes at the root of community, which loses its identity. That is how intellectually you control the people. So imperialism is not only economic. The answer is in the context of Africa, but points are very well applicable to India also. And there are many more examples. So today, there is a need to accept that the process of decolonization, which began with political independence, remains incomplete. There is need to take it further to cultural and intellectual decolonization level. तब आपका जवाब complete होगा. Now in this answer, you may not write 5 points. आप 2 लिखो, 3 लिखो, but question को decode तो करो अच्छे से. सीखो यूपीएससी कहाँ पहुंच रही है. I can tell you, I was reading one book by पवन वर्मा recently, कल परसों ही, about evolution. उसमें एक सेक्शन था इंडियन पेंटिंग्स कैसे इवॉल्व होता है. It talks of oscillations of paintings, company painting, Bengal school and progressive painting, etc. I will not go there, but he has used some terms. I want to give you that term here. Lot of them. How such decentering of Indians from Indian history, for example, and then narrative define कौन करता है, उसमें परिणाम क्या क्या होते हैं. I'll just list some points. आप उसको लिखो एक एक करके, क्योंकि उसमें हाँ इसमें समझने वाली बात है. यूरोपियंस विल से कि भाई हम उस समय तो इग्नोरेंट थे, हमारी गलती नहीं है, अब जान गए, अब नहीं करेंगे. उस समय सर्कल ऑफ मोरलिटी छोटा था तो हमने स्लेव बना दिया, अब बड़ा हो गया, अब उनको स्लेव नहीं बनाएंगे. ये थोड़ी बात हुई, उस समय भी वो गलत था. सो दिस काइंड ऑफ यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री राइटिंग, such kind of Eurocentric history writing is not out of ignorance, it is willful ploy. ये सोची समझी साजिश है, ignorance नहीं है. उस समय भी ignorance नहीं था. And there are many ways to prove that, but we will not go into that debate. But पहले समझो उसका परिणाम क्या होता है. First is justification of conquest and of civilizing mission. जैसे इंडिया में देखो ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट वाज नॉट फाउंड वेरी एमेनेबल टू बी सेटल्ड एंड टैक्स पेइंग कम्युनिटी वहाँ क्रिएट नहीं हुए, लेबर नहीं बने, तो बना दिया इनर लाइन परमिट. वी हैव नॉट मेड इट, ब्रिटिश हमारे से चल रहा है वो. आई भी बना दिया ताकि आप यहाँ पे नहीं होगे, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे. और वहाँ पे फिर क्या किया, सेंड मिशनरीज देयर टू सिविलाइज देम, काउ देम डाउन. So from 1890s to 1940s, hundreds of missionaries were sent, especially under American Baptist Mission, to Northeast. Although they were not very successful, अलग बात है. But civilizing mission क्यों? क्योंकि ये लोग सेटल नहीं होते, इनके पास कल्चर नहीं है. These are uncultured barbar people, कल्चर देना पड़ेगा. इनको हम एलिवेट कर रहे हैं. This is called superiority complex. ठीक है. Then you go for next thing, controlling the narrative. And it has very real effects. When you control narrative, when you read the history, first of all you deny indigenous history. So इसके अंदर सब पॉइंट्स है. अभी है
denial of indigenous history. जैसे कि in our history optional we have sometimes question, did Indians have historical consciousness? Typical colonized question. किसने क्वेश्चन किया? Who defined what is historical consciousness? Renaissance के बाद in Enlightenment era etc. Europeans developed some type of history writing and that became the benchmark and standard कि इसको history कहेंगे, बाकी सब mythology है, right? And that became the question. Raja Tarangini is the only book which comes close to history writing. कौन सी history writing भाई? European standard की. अब when we look at the Buddha sculptures, अमरावती, मथुरा and गांधार, सुंदर कौन सा है? क्यों गांधार सुंदर है? ग्रीक के क्लोज है इसलिए. What is the benchmark and standard of the beauty? It is which is closer to Greek, it is beautiful. ये क्या बात हुई? We consider Mathura as more beautiful because it is about our kind of aesthetics. We had our own indigenous aesthetic vision. Our paintings were called grotesque and backward. अजंता को बेकार बुलाया था. And then we had to take lots of efforts, but not all of us could do that. We internalize that critique ourselves. So we are inferior. Then once you do that, they will come and say, देखो इनकी कास्ट अलग, इनकी जाति अलग, इनका धर्म अलग, आपको सबको मैं इक्वल ट्रीट करूंगा, मैं जस्टिस का रखवाला हूं. आई विल डू डिवाइड एंड रूल. सो डिवाइड एंड रूल का बेसिस आता है हु कंट्रोल्स नैरेटिव ऑफ योर ओन हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी. सो फर्स्ट यू स्टार्ट सेंसस ऑपरेशंस, फर्स्ट यू स्टार्ट ऑल दिस इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट एंड देन यू कम एंड से इसको रिजर्वेशन, उसको इलेक्टोरेट. तो आपने पहले नॉलेज क्रिएट किया और फिर इसको यूज भी किया. UPSC asked questions in mains of modern India. Orientalism was knowledge used by imperialism for the reason, but is a knowledge created for imperial usage. So you go for divide and rule. Then the third thing you have is delegitimize resistance. कि अगर कोई अपोजिशन करता है तो वो कैसे गलत है, तो कैसे आपके ही कल्चर के खिलाफ है, आप हमें बताएंगे हमारा कल्चर क्या है, राइट? सो दिस बिकम्स द पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट, देन यू गो फॉर थर्ड पॉइंट. यू हैव डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री एज पर योर रिक्वायरमेंट. Dark ages, so yes. Now we have taken almost 40-50 years to understand that post-Mauryan era was not dark age. One of the glorious eras है वो. It took time and efforts of intellectuals for decades and decades. तो just एक बार तो उनका आप देखो, you see कैसे फर्क होता है. In the post-Mauryan era itself, I'll give an example. If European authors are there, they will write Roman trade. हम लिखते Roman trade हुआ था उस समय. So when you use Roman trade, it means ये trade Roman लोगों ने शुरू किया था. That is what they mean by that. Now we write it was not a Roman trade, it was Indo-Roman trade. Indian Ocean trade network pre-existed. In that, Romans added their ships and fleet and made it larger. In the post-Mauryan era, when Augustus conquered Egypt, Egypt became Roman colony. He started annual expeditions to India. उनकी कहावत क्या है कि हमने रास्ता खोजा इंडिया पे जाने का. उस समय अगस्टस ने, हमने इंडियन ओशन को जोड़ा आपस में, पहले कुछ नहीं था. So they would write Roman. Example क्या है? Mortimer Wheeler will come and Wheeler will start excavation in Arikamedu. In Arikamedu उसको कुछ मिलेंगे pots of Roman Empire. बोलेगा ये तो यवना कॉलोनी थी, हम पहले आने वाले थोड़ी है. Yavanas had already come and founded Arikamedu. This is the concept. So therefore consciously our historians never use the word Roman trade. We always use Indo-Roman trade. आपको कहाँ कहाँ resist करना पड़ता है, colonial knowledge देखो. So then you have exoticization. कि Europeans are normal, Indians are exotic. उसमें किसी का अपमान नहीं है, but it leads to objectification. We are to be studied in museums. We are to be painted as specimens on company paintings. है ना? तो हम objectified हो जाते हैं. And then who controls that objectification? European master, imperial master. We should deny being objectified and exoticized, because once that is done, it leads to marginalization.
And once that is done, you feel that you are inferior. So you have that kind of superiority, inferiority coming up. So you have inferiorization. And that inferiorization which is created by Europeans, you start internalizing. Swami Vivekananda ने कहा था, a very famous quotation by Vivekananda where he says, जब पहला बच्चा इंडिया में स्कूल में जाता है, the first thing he learns कि मेरा बाप मूर्ख था, परदादा पागल था, भगवान झूठ है, कल्चर बेकार है. और उसके बाद पढ़ाई शुरू थी मिशनरी स्कूल्स में. दैट वाज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड. दिस इज डीकल्चराइजेशन प्रोसेस. सो यू इंटरनलाइज inferiorization. Then you have deculturization. I know that these are too many terms for you at a time, and I am purposefully not giving you names of various thinkers. It is not required. आप फंडा समझ लो. It will come very handy in some questions, especially this kind of questions that UPSC has started asking. UPSC is not asking such question every year. हर साल नहीं पूछती है. 2-3 साल में एक सवाल आता है. लेकिन अगर आए तो पकड़ो, छोड़ो मत उसको. And second thing is in a normal question on decolonization, where they ask for reason for underdevelopment etc. उसमें आप psychological context, Franz Fanon etc. एडवर्ड सईद, चिनुआ अचेबे बिल्कुल ऐड करो. उसको भरो मत पूरा. इट विल स्टिल बी 1/3 ऑफ योर आंसर. 2/3 शुड स्टिल बी ट्रेडिशनल आंसर. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल. 1/3 ये डालोगे ना, उससे पूरा फर्क हो जाएगा. ठीक है. ओके देन, कोई और डाउट? आनंद सर, देन लेट अस स्टॉप हियर. ठीक है, चलो.